Am I audible? Am I audible? Am I audible now? Namaskar and welcome. Welcome our media friends to this press conference. Before I start actual, let me introduce myself and my organization. My name is Dr. Rameshwar and I am the president of All India Kashmiri Samaj. A brief about All India Kashmiri Samaj is that it is an Aiks organization of Kashmiri Hindus having affiliates both within India and abroad. We have almost 50 affiliates at different parts of the country. I feel myself honored to be here in the intellectual capital of India, and it is this capital which has contributed greatly to the politics, to the independence, to the culture of India. And it's truly true when people say what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. And I'm reminded of Rabindranath Tagore, who is not only a name, who is not only a modern figure, but he is one of the icons of India. I'm reminded of another cultural icon, Satyajit Ray, whose films are shown in Hollywood and told how to direct, how to get things done. And I'm also proud of Ishwar Chandra Vidyasagar, whose contribution is known to everybody. And one more thing which I want to add is the name. His name was Justice Shabrinath Pandit, a Kashmiri Pandit, a Kashmiri Hindu, who was the first Chief Justice of Bengal High Court. And I have been told that a hospital under his name, SM Hospital, is being run in Bengal even today. Well, gentlemen, when I talk about Kashmiri Hindus, it's not a fictional story, it's not a pleasant story. It is something to do with our pain. It is something to do with our exodus. Our souls are traced. We have been inflicted with extreme psychological injury, and that psychological injury has hurt our souls. On the intervening night of 19th and 20th January 1990, this helpless community of about 4 lakhs was thrown out. And that was the day when pluralism, when secular ethos, when democracy was put to use. The whole minority community of Kashmir was thrown out of Kashmir, and ever since we have been living as refugees in our own country. To be very honest, in Kashmir we have military tahsil, a synthetic religion which was heard beyond repair. And today the situation is that Kashmir is without Kashmiri Hindus. When I come to Bengal, as a part of the awareness campaign, when I come to this intellectual capital of the country, I come with a message that justice has to be done to this helpless minority community. That the perpetrators of genocide have to be brought to the book, have to be brought to the justice. Please remember, in 1994, National Human Rights Commission gave a ruling that what happened to Kashmiri Hindus in the valley of Kashmir is akin to genocide. We only say that please acknowledge our genocide. We only say that those people who go on TV sets and openly claim that we have killed such and such number of Kashmiri Hindus are roaming free. We request the powers that be that they should be brought to the book. We have to understand our demands are not such that they cannot be met. We have very simple demands, very simple, doable. We want rehabilitation based on restitution, based on non-defilement. We want a healing touch policy for this bleak community.
And what does this healing touch mean? We want that the threat perception and the insecurity that is gripping this Kashmiri Hindu minority must be addressed too. Now, how can you address? The first thing is that you can't allow a stateless, a homeless, a territoryless community of about 4 lakhs to stay on 80 lakhs. We want to go back to our roots. We want to go to the places we belong to. We want to ensure a dignified and a respectable life for our children, for our next generation. And when I say this thing, I don't say that this issue belongs to Kashmiri Hindus or it belongs to a particular community. It's a national issue. It's a national issue. Why? Because an injustice has been done to a particular section of the society and the world remains quiet. We want that world should take note of it. We want our brothers and sisters living in Bengal must take note of it. Must raise the issue, not on the basis of community, not on sectarian basis, but on the basis of humanity. A human civilization has been thrown out. And there is an attempt that this minority community of 4 lakhs is being eroded from the social psychological memory of Kashmir. That is not done and we will not allow it to be done. We are not alone in this fight. We have with us the nation. We have with us the support of all of you people. And I am grateful to the media community in highlighting our issues, in highlighting our cause, and in bringing the issue of the displacement of Kashmiri Hindus to the forefront and keep it alive and keeping for all these 32 years. Now today, there is a greater onus on the media community that they have to take things forward. They have to take it to a logical conclusion, and that logical conclusion is that our journey once again ends at Kashmir, our natural habitat. We have to understand that Kashmiri Hindus are no ordinary people. They have a 5,000 years old history behind them. They are at origins of Kashmir. Not only that, they have richly contributed to the culture, to the politics, to the education, not even to the state of J&K, but to the country. The first Prime Minister of India belonged to the community of Kashmiri Hindus, Lal Bahadur Shastri. So such is the legacy of this helpless minority. And today, when we are talking about our pain, about our hurt sentiments before you, we are once again trying to bring your attention to the issues that have been willfully kept under the carpet, that have not been allowed to see the light of the day. Fake narratives have been built. False information has been given all these 32 years when people have been saying that it's a fiction. How can it be fiction when 3 lakh, 4 lakh people cannot leave en masse without any provocation? They cannot go unless and until something extraordinary has happened to them. And that extraordinary thing has to be reversed. And how will it be reversed? You have to reverse the genocide. You have to have a commission of inquiry to fix the accountability of the people who perpetrated genocide on this helpless community. And we demand that it has to be in a time-bound manner. You can't have 32 years plus war waiting. Our long, our life. A generation of Kashmiri Hindus has been
It is this generation which is seeking response from the country and countrymen. And also, we have number of discussions, number of debates going on everywhere, while somebody has a story of his own to tell, while they keep on diluting the import, they keep on diluting what has happened to this helpless minority. Sometimes a glory like Jagmohan glory is being built that Kashmiri Hindus were driven out by Jagmohan because he offered them small socks here and there. Well, that is not true. Nobody can give small socks to somebody and ask him to leave his home and earth for nowhere to go. It is a bleak future for this community. I must say that it is a futureless community without hope. Land and one's own soil is important for the growth and development of religion, language and culture. And it is this soil which has been deprived from us. What we want back our soils with honor and dignity. We want to go back to the valley of Kashmir with honor and dignity. That is my small take on the issues that confront us. Well, if our friends have some questions, I am open to questions. If any of us want some clarification, want some questions to be asked, to be put, we are here to respond. Throughout our country and even abroad. So what do you think will be the first step that should be taken towards their rehabilitation and the understanding among the Kashmiri community themselves to come out and support this cause? See, it's a very, very important question that you have posed. Kashmiri Hindus are spread throughout the globe this time. 40% of Kashmiri Hindus have come to occupy Jammu as a home of their adoption. Rest 20% have come to occupy Delhi NCR as a home of their adoption, and rest 40% have spread throughout the globe. At least once an effort is made, you can relocate 40% of Kashmiri Hindus who have taken Jammu as a home of their adoption. They can relocate them to the valley of Kashmir 1. Not only that, we have a Jagti township which has about 5,000 camps constructed by the government. That Jagti camp can be relocated to that place. And 5,000 families would mean about 30,000 people. If one family has about 5 persons, father, mother, son, daughter, grandfather, grandmother, that would come to about 30,000 people, and 30,000 people at one go is not a bad beginning. So, for us, there are so many things the government can do, but there has to be a political will to do it. Not only that, but more important than that is to take some concrete confidence building measures. And concrete confidence building measures would mean that they have to address the threat perception. They have to remove the insecurity, and for that thing they need to take certain visible steps. I can tell you only a few months back, there was one Mr. Anil Bindu who did not leave Kashmir for all those 32 years. He was a shopkeeper. He was giving a great service to the civil society of Kashmir by virtue of providing medicine. Even during COVID times, he was a great help to all the people of Kashmir. He was killed in broad daylight. So that means the person who stayed there did not leave, was there available to the people 24/7, was not spared. So it is a great message to all the Kashmiri Hindus that look here, you don't have to come. It's an effort to kill their desire to come back to the valley of Kashmir. So that is why I say, if they have to start a rehabilitation policy based on human touch policy towards Kashmir, the more important part of the story is that they must address the threat perception and they must remove insecurity from this great community.
ठीक है। बहुत अच्छा आपने बोला। जैसे मैंने अभी अपनी चर्चा में बताया कि जो ये 3 से 4 लाख कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी कश्मीर में जिनको पलायन करना पड़ा अंडर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, टेररिज्म हुआ, लोगों को मारा गया, लोगों को खत्म कर दिया गया, हमारी बहनें हमारी बेटियाँ कुछ ऐसे हालात में मारे गए, उनको एक गैंग रेप किया गया और उनके वो पैंट शॉप पे चढ़ा के उनको काट दिया गया 90 में। तो ऐसी चीज़ें हो गई। तो ऐसी चीज़ें जब हो गई तो वास्तविक ये तो नेचुरल है, संभव है कि वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं थी, इनसिक्योरिटी हो गया, थर्ड परसेप्शन हो गया। लेकिन इन 32 सालों में काफ़ी कुछ बदलाव कश्मीर में आया है। गवर्नमेंटें, सरकारें बनी। अभी आज की डेट में एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा धीरे को दिया गया है, हालात सुधर भी रहे हैं। तो ऐसे में हम ये कल्पना कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक स्टेप्स लेने चाहिए, एक कॉन्क्रीट स्टेप लेना चाहिए कि हम इनको रिहेबिलिटेट कैसे करें, हम इनको वापस कैसे भेजें और किन हालात में भेजें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हालात सुधारने का है वो ये है कि जो इनसिक्योरिटी हमारे में है, जो थर्ड परसेप्शन हमें है, उस थर्ड परसेप्शन को कैसे आप दूर करें। जैसे मैंने अभी बात किया एमएल बिंद्रू साहब 32 साल से कश्मीर में रह रहे हैं, वो नहीं निकले थे, उनका एक केमिस्ट दुकान था, लोगों की सेवा करते थे, सबको दवाई दारू देते थे। इतना ही नहीं कि जिस वक्त कोविड का वक्त हुआ, जो मेडिसिन नहीं मिलते थे, स्पेशल तौर पे वहाँ पर उन्होंने लोगों की सेवा की, उसके बावजूद भी उसको मार दिया। क्यों? इसलिए कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। क्यों? कि अगर कश्मीरी हिंदू वापस जाना चाहे तो उनकी डिज़ायर क्रश कर दी जाए ताकि वो वापस ना जाए। तो ऐसे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कश्मीरी हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं उनका नंबर बहुत कम है, शायद 800 फैमिली के लगभग होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें उनको भी प्रिवेंट करना है। उनको भी जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, जैसे नॉन कश्मीरीज वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए, उनको भी मारा जाता है। तो ऐसे में क्या ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे थर्ड परसेप्शन और सिक्योरिटी एड्रेस हो जाए? और सबसे पहले मुझे ये कहना चाहिए और कहना भी पड़ रहा है, जो मिली जुली तहजीब वहाँ की है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी है, उनको मजबूत करना चाहिए। उनको ये देख के करना चाहिए कि भाई यहाँ पर एक हमें कट्टरपंथी को एड्रेस करना चाहिए, रैडिकलाइजेशन को एड्रेस करना चाहिए, फंडामेंटलाइजेशन को एड्रेस करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें दूर हो जाती है तो एक माहौल वहाँ पर आ सकता है जहाँ पर गवर्नमेंट एक स्टेप ले सकती है हमें रिहेबिलिटेट करने के। हम चाहते हैं एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का गठन हो जाए। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का गठन होने का मतलब है कि एक यूनियन बेस्ड पॉलिसी इस कम्युनिटी को दिया जाए जो 25 साल से दरबदर है, और एक ऐसा माहौल वहाँ पर किया जाए ताकि वो जाएं और वो हर माहौल में वहाँ पर ना हो। I'm not listening. I'm थोड़ा बंगाली सर्कल के रिहेबिलिटेशन के बारे में कैसे राइट। जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में पहले बोला कि जो बंगाल है ये एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल भारत का है। भारत की इंडिपेंडेंस में बंगाल का बहुत बड़ा हाथ है, और ये भी आप मान के चलिए 27 से पहले कैलकाटा भारत का कैपिटल हुआ करता था। यहाँ की जो हम आज भी बताते हैं कि जो बंगाल आज सोचता है तो भारत कल सोचता है। तो इस नाते जब हम आए हैं एक अवेयरनेस कैंपेन करके, क्योंकि जो हमारे बंगाल के भाई बंधु है, जो बंगाल का मीडिया है, जो बंगाल की पॉलिटिक्स है, वो इस इशू को उठाए और अच्छे से उठाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि इसको एक ऐसा नाम दिया जाए या एक ऐसा टर्म दिया जाए जिसको ये एक वातावरण खराब करने की स्थिति पे आ जाए। हमारा यही मानना है कि इंसाफ हो जाना चाहिए, इनजस्टिस होना चाहिए। और हमें पता है कि जो वेस्ट बंगाल, इसकी ताकत क्या है, ये एक लिबरल इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया है, और उस नाते हम यहाँ पर आए हैं, उस नाते हम आपके सामने गुहार लेके आए हैं कि साहब आप हमारी मदद कर लीजिए एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाने के लिए, एक जेनोसाइड को रिवर्स करने के लिए। इतना ही नहीं, और उन लोगों को आप
पनिश कर दीजिए जिन्होंने हमें निकाला, एक अकाउंटेबिलिटी उन पर रख दीजिए कि साहब आपने ये किया है और इसका आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा सर, आपने बताया कि हिंदू माइनॉरिटी को अंदर आपने संबोधित किया, और जबकि पश्चिम बंगाल में हिंदू माइनॉरिटी के ये मेजोरिटी के अंदर में भी बोला, क्योंकि मेजोरिटी तो बोल के संविधान में है नहीं, लेकिन माइनॉरिटी बोल के है, माइनॉरिटी के अंदर में मुस्लिम है और सिख है, ये सब आ रहे हैं। तो आप अपने को माइनॉरिटी बोल के इस बंगाल में क्या चाहते हैं? देखिए, ये न तो माइनॉरिटी का इशू है न तो मेजॉरिटी का इशू है, ये एक ह्यूमैनिटी का इशू है, ये एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का इशू है। हम अगर अपने आप को हिंदू या मुसलमान देख के चलेंगे तो कैसे चलेगा काम? आफ्टर ऑल खून तो एक ही का है। अगर मुझे चोट आती है, मुझे खून की जरूरत है, मैं हिंदू नाते होके कोई मुसलमान आके मुझे खून देता है, तो वो तो इंसान का ही खून है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उस ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे आके काम करना है। और उस ह्यूमन सिविलाइजेशन को ये कश्मीरी हिंदू के लिए नहीं है। आज जो कश्मीर में हुआ है, कल किसी भी कोने में हो सकता है, भारत के किसी भी कोने में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो उस वक्त हम ये नहीं कहेंगे कि साहब हम बंगाल में बैठे हम क्या कर सकते हैं। हमें ये कहना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। और वो क्या नहीं कर सकते हैं कि हमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी से ऊपर उठ के एक ह्यूमन के नाते, एक ह्यूमैनिटी के नाते, एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के नाते इस इशू को उठाना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए और ताल ठोक के ये बोलना चाहिए कि भाई ये इंसान और इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। सर, मेरा पहला सवाल है कि आप जो मतलब कश्मीर में घटना घटी, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? और इसी का उदाहरण भारत में देखा गया था कि यहाँ पर जो 2021 में इलेक्शन हुआ, उसी के रिजल्ट के बाद ही ऐसा घटना हुआ कि एकदम बहुत सारे घर हिंदू लोग छोड़ के निकल गए थे। तो इन दो परिस्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और काफ़ी ट्रैप करने का कोशिश किया लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कश्मीर में रोज़मर्रा ऐसी घटना होता है। मैं आपको बताऊंगा, 1990, 19 और 20 जनवरी की रात में कम से कम 3-4 लाख लोग पलायन कर गए कश्मीर से। उसके बाद 1990 से 2000 का दशक, जो कुछ छुटपुट कश्मीरी हिंदू वहाँ पर रह गए थे, उनका नरसंहार हो गया। संग्रामपुरा आपने सुना होगा, नादी मर्ग मैसेकर आपने सुना होगा, वधहामा मैसेकर आपने सुना होगा, चट्टी सिंह पोरा मैसेकर आपने सुना होगा, जहाँ सिख कम से कम 32-33 सिख को मारा गया। काबू चक मैसेकर आपने सुना होगा, तेलवनी मैसेकर आपने सुना होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इनका एक पैटर्न है। There is an uninterrupted continuity in these killings. तो ये दर्शाता है कि इसके पीछे जो है, इसके पीछे एक ही ताकत है, और वो ताकत ये है कि वो चाहती है कि यहाँ से हिंदू भाग जाए। और जिस वक्त हम आपसे संपर्क करते हैं, आपसे संभोग करते हैं, हम चाहते हैं कि उस ताकत को डिफीट करना है। हमें किसी से लड़ाई नहीं करना है, हमें कोई गन नहीं उठाना है, किसी को मारना है, हमें उस ताकत को डिफीट करना है, हमें उस सोच को मारना है जो सोच रेडिकलाइज माइंड पैदा करती है, जो सोच एक फंडामेंटलिस्ट पैदा करती है। वो यहाँ से हो या यहाँ से हो, मर तो जाता आदमी है ना। तो इस आदमी को बचाने के लिए हमें उस सोच को मारना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारे मीडिया के भाई बंधु हैं, जैसे आप यहाँ पर लार्ज नंबर पे आए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात को लेकर के आपने ये सोचा कि हम इस बात को सोचें कि आखिर मामला क्या है। मामला मैंने आपके सामने रखा, इलाज आपके हाथ में है, आप इसको कैसे करेंगे। मैं इसका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ कि आप इस इशू को कैसे उठाएंगे और क्या करेंगे। मैं फिर आऊँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे यकीन है जिस धरती पे मैं आज बैठा हूँ, इस धरती ने वीरों को जन्म दे दिया। Any more questions, please? We will have time for interactions one-to-one outside here as a team.
Okay, okay. So we have some small tea and snacks outside. मैं आप सब भाई बंधु से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आके एक चाय पी लीजिए हमारे साथ, अच्छा लगेगा हमें। और इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम कल अखबारों में देखेंगे, मीडिया में देखेंगे, टीवी चैनल्स पे देखेंगे, इस बात की ये चर्चा होनी चाहिए यहाँ पर, और इस चर्चा को लेके लोग जाग जाएंगे, जागरूकता आ जाएगी, और इससे हमें काफ़ी खुशी होगी। अच्छा सर, 2 दिन आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, रॉटरी क्लब बोल के, वो कश्मीर से आए हुए थे। उन्होंने हालात पे बोला कि कश्मीर पंडित अभी भी सुरक्षित है, तो आपकी अभी भी मंदिर की स्थिति वहाँ पर क्या है और हिंदू की स्थिति क्या है? क्योंकि यहाँ से पंचायत चुनाव के लिए जो भी गए थे वहाँ पर बोले कि हिंदू सुरक्षित है। ठीक है, चलो हम मानते हैं कि वो बोलते हैं वहाँ पर हिंदू सुरक्षित है, हाँ ठीक है, तो वो आइए। बिंद्रू साहब तो 4 महीने पहले मार दिया उनको, 4 महीने पहले मार दिया उनको। जो नॉन कश्मीरी हिंदूज हैं उनको आड़े दिन मारते हैं। अभी 15-20 दिन पहले एक आदमी को मारा कि वो बिहार से बेचारा गोलगप्पे बेचता था। ये भी मानते हैं कि साहब हालात ठीक है, तो वहाँ पर वो घन कैसे चल रहा है? ये भी मानते हैं कि चलो आप ही की बात मानते हैं कि पंचायत इलेक्शन हो गया, बड़े अच्छे से हो गया, ठीक है साहब, हो गया, अच्छे हो गया, तो बिंद्रू साहब को क्यों मार दिया साहब? ये तो आप ही की सेवा कर रहा था, ये मेरी सेवा तो नहीं कर रहा था। बिंद्रू साहब, ML बिंद्रू साहब, आप गूगल पे जाके, अखबारों में जाके देख लीजिए। बिंद्रू साहब 32 साल से वहां पर लोगों की सेवा करी है, दवा दे दिया है। कोविड के जमाने में जिस वक्त दवा नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल से अरेंज कर दिया दवाई और उनको दे दिया। ब्रॉड डे लाइट में आदमी गया और उसको मारा। वो इसलिए नहीं मारा उसको कि वो क्या था, इसलिए मारा कि वो हिंदू था, ताकि बाकी जो हिंदू है वो दहशत खाए और वापस ना आए। तो अगर वहां पर ठीक है तो आप खुद ही बता दीजिए, फिर आपको कश्मीरी पंडितों को जाने की क्या जरूरत है? आप खुद उनके घर जाइए, साहब ले जाइए, आपका वतन है, आप आके बैठिए। कौन रोक रहा है आपको? सिविल सोसाइटी को तो कोई नहीं रोक सकता ना। सिविल सोसाइटी किसी पॉलिटिक्स के मोहताज तो नहीं है ना। सिविल सोसाइटी किसी कंट्रोल में नहीं है। सिविल सोसाइटी की अपनी सोच है, सिविल सोसाइटी के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर ऐसे हालात है साहब वहाँ पर, तो आप खुद आके जाइए उनको, हम आएंगे। मैं तो पहले जाऊंगा वहाँ पर। मंदिर की क्या स्थिति वहाँ पर? साहब मंदिर में एंक्रोचमेंट्स होते हैं। हमने पिछले 32 साल से ये बोला है कि टेम्पल्स एंड श्राइन बिल का गठन हो जाए। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट है, जैसे औकाफ एक्ट है, वैसे ही हमारे जो टेम्पल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को एनक्रोच किया जा रहा है। उनको कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से हो जाता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के तहत उनको अंदर ले जाएगी, भी यहाँ पर बस अड्डा बनाना है तो चलो ये प्रॉपर्टी ले जाए। तो उसके नाते हम पिछले 32 साल से ये गुहार कर रहे हैं कि भैया एक टेम्पल्स एंड श्राइन बिल का गठन किया जाए, ताकि जो हमारे टेम्पल्स हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, जो हमारे कल्चरल सेंटर्स हैं, वो इस एक्ट के अंदर आके महफूज रहे। ऐसा तो नहीं हुआ। आए दिन वहाँ पर पता लगता है कि साहब वो मंदिर का जमीन ले गया, कभी वहाँ से वो ब्रिज बनाया, तो कभी किसी ने कुछ कर दिया। और इसके बाद जो वहाँ पर एंटी डिस्ट्रस सेल्स एक्ट पास हुआ था अर्ली 90s में J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो एक टूथलेस टाइगर था। वो वहाँ की सरकार, तत्काल सरकार ने एक एंटी ड्यूरेस सेल एक्ट किया था पास कि जो ये कश्मीरी हिंदू यहाँ से पलायन करके गए हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी कोई न खरीदे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी खरीदने की नहीं है, ये ड्यूरेस सेल डिक्लेयर की जाएगी। वो साबित हो गई टूथलेस टाइगर। लोगों ने बेदहाड़ा बेचा और बेदहाड़ा खरीदा। और उसके बाद जब ये बात सामने आई, जब हमने प्रदर्शन किया कि भैया ये क्या कर रही है, कौन सा एक्ट आपने बनाया जिसका कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर फिर गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक पोर्टल बनाया जहाँ पर आप अपनी ग्रीवेंसेस डालते हैं। और मैं बड़े खुशी के साथ ये कह रहा हूँ कि कई लोगों को इंसाफ भी मिला, ऐसा नहीं है, इंसाफ भी मिला उस पोर्टल के जरिए जिन्होंने दायरा के, और जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसके साथ नाइंसाफी है, उसको लैंड भी मिल गया। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी और काम करना है कि जब आप रिवर्स माइग्रेशन चाहते हैं, जब आप रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी हिंदूज चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर रहना बंगाल से जाके वहाँ पर कश्मीर में जाए। इसका मतलब ये है कि आपको वो हालात मेरे लिए बनाने हैं, आपको वो सारा माहौल मेरे लिए क्रिएट करना है, ताकि मैं सांस ले लूँ पूरे माहौल, ताकि बंदूक के साए के डर से मैं निकल जाऊं।
साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 32 साल से मिल रहे हैं 32 साल से मिल रहे हैं। वो कौन सा दिन होता है? आपको क्या लगता है जो हम यहाँ से बोल रहे हैं, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं जाएगा? क्या हमारे इंटेलिजेंस के लोग, आईटी वगैरह लोग यहाँ पर नहीं होंगे? मैं चाहता हूँ कि वो हमारी बात वहाँ तक ले जाए। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे इंटेलिजेंस वाले लोग हैं वो ये कहे कि साहब डॉक्टर रैना कोई आया था यहाँ पर, उसने गुहार लगाई, यहाँ पर दुआई लगाई। मैं चाहता हूँ होम मिनिस्ट्री में जाए। मैं चाहता हूँ यहाँ के लोगों तक, जन जन तक ये बात जाए कि भाई एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का मामला है, ह्यूमैनिटी का मामला है, इसको एड्रेस कर दो। इधर इनसे चढ़ रहा है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट पर फर्क क्यों नहीं होता हैं? इधर इनसे चढ़ रहा है कॉन्फ्लिक्ट के बारे कौन सा प्रॉब्लम? में जो बात हो रहा है बात क्यों हो रही है? मैं समझ रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पर आइए। बोलने का मतलब है कि अभी तक आपको कोई समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक का जो समस्या इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है। देखिए 4 लाख लोग वापस ले जाना, इसका मतलब है कि एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल होना चाहिए। आपको पता है हमारी डेमोक्रेसी वोट्स पे डिपेंड है और हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। हम लोग एक एमएलए या एक कॉर्पोरेटर को भी नहीं इलेक्ट कर सकते हैं एक जगह से, तो हमारी बात कौन सुनेगा? अगर हमारा एक आदमी लेजिस्लेचर हो, अगर हमारा एक आदमी मेंबर पार्लियामेंट हो और मेंबर पार्लियामेंट हमारी बात करे, लेजिस्लेटर हमारी बात करे, तब हमें बात आगे चल जाएगी जी हाँ भाई हम आपको ले जाएंगे। एक एमएलए को पता है मुझे इस डॉक्टर रैना का क्या जरूरत है, मैं इसके वोट के बगैर ही जीत के आ जाऊंगा, तो वो मुझे क्यों ले जाएगा वहां पर? तो तभी मैंने बोला वी डोंट वांट टू गो बैक ऑन द पावर ऑफ वोट, वी वांट टू गो बैक ऑन द पावर ऑफ द पीपल। We will go back on people's power, and that's why Dr. Rana is here. Okay. Thank you so much. God bless you all.